Hello everyone, I'm Nilanjan Bose, the professor of CIMAGE College, and this time I'm going to present one of the interesting videos you have ever seen. And that is all about how to enhance your word power. My dear students, most of you are preparing for different kind of competitive examinations, and the most difficult section, it appears to you, and that is vocabulary. The moment you get to know that what is the meaning of the words, आपके मन में एक अलग सा डर आ जाता है. The fear factor works. But how to overcome that? For the last few years, you have been searching for the solution. You are doing nothing else. But actually, you are complaining that I don't have good vocab. Now just finish it up, guys. This is the time where I'm going to present a few words. I'll be practicing with you, in fact, and you will come to know that what are the meaning of these words, and these words are really important from the perspective of competitive examination. I'm quite sure about it. तो चलिए आज का इस सेशन को बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग बनाते हैं. कुछ वर्ड्स को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जिसका मीनिंग आप जानोगे. एक्चुअली उसका एंटोनिम को हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट? एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स. In the examination, particularly if I'm talking about the competitive examination, in those kind of examinations, you will find the words related to synonyms as well as antonyms. तो यहाँ आज का ये सेशन को हम एंटोनिम में कन्वर्ट कर दिए, जिसमें हम लोग कुछ जानेंगे कौन वर्ड का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, राइट? So without wasting time, let's get started today's session. I can easily give you guarantee that, yeah, this session is going to be really enjoyable for you. So wait and watch and just watch the video till the end so that you will have a good stock of words. And the most important thing is that after the end of the session, you are going to practice these words in your daily life as well. तो चलिए आज का सेशन को हम लोग शुरू करते हैं. The first word, that is traduce. Now, what is the meaning of traduce? Look, the thing is that your approach should be, first of all, you will come to know that what is the meaning of this particular word. Main word क्या है? आपको देखना होगा मेन वर्ड है traduce. So traduce का मतलब होता है basically demean और denigrate या defame somebody else. तो किसी को बदनाम करना, इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए किसी का अप्रिशिएट करना, किसी का प्रशंसा करना. But my dear students, I can tell you one thing, that in the options you will not find the common word. The question status, they like to give those kind of words which are quite unknown to the students, because that will be easier for them to eliminate you. So you should have good stock of words. For one word, you must have the stock of at least 5 to 6 words. Going to the option, first option is lean, second one is great, third one is compliment, and fourth one is obese. Straight away you will come to the answer, that option C, compliment मतलब किसी का प्रशंसा करना. So traduce का basically opposite word क्या हुआ, antonym क्या हुआ? That should be compliment, means appreciate. Lean मतलब क्या होता है? लीन मतलब होता है बहुत लीन एंड थिन पर्सन, हम लोग नहीं बोलते हैं दुबला पतला. ग्रेट मतलब किसी चीज को कट करना. ओबेसिटी से ओबीस बना है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. Moving to the question number 2, conspicuous. This is a very common word. I'm not sure that whether you know this word or not, but yes, from now onwards you will come to know that what is the meaning of conspicuous. First option, misappropriate. Second option is budding. Next one, hug. And last option is obscure. Now conspicuous का मतलब होता है, if certain thing is conspicuous, it means that is very much pretty clear. बहुत ही clear अगर हो जाए तो उसको conspicuous बोलते हैं. तो opposite क्या होना चाहिए? जो clear ना हो. Now going to the option, you will find option A, it is written misappropriate. It doesn't have any connection with that. Second one is budding, ये भी नहीं हुआ. Hug, ये भी नहीं हुआ. Obscure, that is unclear. Actually किसी picture को अगर हम बोलते हैं obscure picture, it means that unclear. So that is the antonym or the opposite word of the main word, that is conspicuous. So your correct answer will be option D. Right. Let us move to question number 3. It is written stealthy. Now what is the meaning of stealthy? देखो स्टेल्दी का मतलब होता है if certain document has kept stealthy या certain information have been kept stealthy, इसका मतलब किसी चीज को गुप्त रखा गया. तो गुप्त का ऑपोजिट क्या होना चाहिए? जो सबके सामने हो, right? So going to the option, you will find the first option is opening, next in open, after that in, and last one is 40. तो स्टेल्दी का ऑपोजिट क्या होना चाहिए? जो एक्सपोज्ड हो चुका है, राइट? इन दैट सेंस यू आर गोइंग फॉर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओपन. सो स्टेल्दी मींस सीक्रेट एंड जस्ट ऑपोजिट इट शुड बी ओपन. सो करेक्ट आंसर इज हियर इज ऑप्शन बी. Moving to question number 4.
astute. If I am saying that a person is astute, it means that he is really sharp minded. उसका बहुत तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न कोई व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं एस्ट्यूट. तो उसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? समथिंग इडियोटिक, समथिंग स्टूपिड. Going to the option, you are getting the first option. It is written common. No, it should not be there. Next one, ridiculous. It means funny. ये भी नहीं हो सकता है. Dignified means respectable. तो ये भी नहीं होगा. Now moving to the option D, it is written idiotic. Yeah, astute का opposite idiotic आप बोल सकते हो, क्योंकि astute means supremely intelligent person और उसका opposite idiotic हो ही सकता है. So option D, it should be the correct one. Moving to word number 5, intrepid. It's a very important word, I must tell you, from the perspective of competitive examination. Intrepid का मतलब क्या होता है? Intrepid का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा फियर, जो निर्भीक हो. निर्भीक हो मतलब जिसको fearless हो, जिनमें fear नहीं हो, right? So first option you are getting that fearful, exactly the opposite one or the antonym one. तो intrepid का opposite हो गया fearful. Intrepid means fearless. सेकेंड ऑप्शन श्रूड, ये नहीं होगा. स्टाउट नहीं होगा. डिफेम नहीं होगा. सो इन दैट केस योर करेक्ट आंसर विल बी fearful. Intrepid, just opposite fearless. So we are done with these 5 words and you have come to know many new words. I'm quite sure about it. But the problem is that you were not supposed to, you are trying to mug up all the words. Don't do that. It's my advice to all of you that you should be trying, you keep on practicing all these words in your daily life and it will enhance your vocab. At the same time, these words, you will be touched with these words. All the time you are supposed to use this word. तो कोशिश करो अपना डेली लाइफ में इस वर्ड्स को प्रैक्टिस करने के लिए. चलिए और एक सेट हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसमें हम लोग जान लेंगे और क्या क्या वर्ड, ऐसा न्यू वर्ड हम लोग सीख सकते हैं. राइट? फाइन. नाउ वर्ड नंबर 6, इट इज रिटन वेन. वेन का मतलब होता है जनरली किसी चीज को डिक्रीज करना, कोई चीज को डाउन करना, डिमिनिश करना. राइट? तो इसका ऑपोजिट होना चाहिए बढ़ना. बहुत सिंपल. सो मूविंग थ्रू द ऑप्शन, ऑप्शन ए इट इज रिटन डिक्रीज. नेक्स्ट वन इज रिपोज. रिपोज मतलब रेस्ट लेना. इंक्रीज, या दैट इज द वर्ड यू आर सर्चिंग फॉर. वेन का ऑपोजिट हो गया इंक्रीज. एंड ऑप्शन डी इट इज ऑल्टरकेशन, मतलब वाद विवाद. इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा है. So in that case, question number 6, the correct answer will be, of course, option C, and that is increase. Right. Now, number 7, ruckus. It means क्या? बहुत ही ज्यादा जो क्लैमरस टाइप का हो, है ना? ruckus. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन मोरूज, ये तो होगा नहीं. सेकंड ऑप्शन अटैक, ये भी हुआ नहीं. नेक्स्ट ऑप्शन डेंजर एंड लास्ट ऑप्शन रेस्ट्रेन. या इट कैन बी रेस्ट्रेन. कंसीडरिंग द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस, आई थिंक ऑप्शन डी इज वेरी नियर्स टू दैट. सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. मूविंग टू वर्ड नंबर 8, रूथलेस. इफ आई एम सेइंग दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रूथलेस, मतलब वो बहुत निर्दयी है. He doesn't have any clemency, he doesn't have any mercy. तो उनका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? ऐसा ऐसा व्यक्ति जिनमें मर्सी हो, जिसमें दया का भावना हो. सो फर्स्ट ऑप्शन ड्रीमी, इट शुड नॉट बी देयर. ऑप्शन बी कंपैशनेट, या दैट इज द करेक्ट ऑप्शन यू आर सर्चिंग फॉर. सो रूथलेस का ऑपोजिट होगा कंपैशनेट, द पर्सन हु हैज द फीलिंग ऑफ कंपैशन, मतलब सिंपैथी. राइट? एक्सप्रेसिंग होगा नहीं, और ड्रंकन इज कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड. सो इन दैट केस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज रूथलेस. Moving to number 9, abject. First option haughty, next miserable, next deny, and after that disobey. तो एब्जेक्ट का ऑपोजिट यहाँ आप क्या करोगे? देखो, डिनाई तो होगा नहीं. एब्जेक्ट पॉवर्टी मिजरेबल बोलते हैं. हॉटी किसी कीमत पे किसी भी एंगल से ये कहीं ना कहीं मैचअप कर रहे हैं, बट बाकी जो वर्ड्स है ये तो कभी होगा नहीं. ओके, सो इन दैट केस वी विल गो फॉर ऑप्शन ए. ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, एक्सट्रीकेट. एक्सट्रीकेट का क्या है? एक्सट्रीकेट मतलब होता है किसी चीज को फ्री कर देना. राइट? किसी चीज को मुक्त कर देना. तो उसको उल्टा क्या होना चाहिए? किसी चीज को अटैच करना. बहुत सिंपल. तो ऑप्शन ए, दैट इज क्लियरली रिटन अटैच, एंड दैट शुड बी द करेक्ट आंसर. Because we are talking about extricating certain kind of things, means we are trying to get some words free. तो उस केस में हम लोग अटैच अगर करेंगे तो उस केस में अटैच जो वर्ड है वो उसका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी इज द आइडेंटिकल वर्ड विद एक्सट्रिकेट. इसका कंप्लीटली मैच कर रहा है क्योंकि ये मीनिंग है. तो correct answer will be attach. Right? So these are the words. I am quite sure that all the words now you have come to know, and many of the words are new to you, but hardly it matters, because from now onwards you have come to know all the meaning of the words.
So you have a good stock of vocab right now. And in the coming times, I'll be presenting more videos related to antonym and synonym and verbal reasoning, all these things. And these things are going to be really important from the perspective of competitive examination. I'm quite sure that now you will be in a better position to deal with vocab section, right? So I have tried my level best to provide you a good important words which are really important from the perspective of competitive examination. Okay, guys. So I'm quite sure that you must have enjoyed the session, and you will keep on practicing, and just wait and watch for the next video, which is going to be really interesting for you. So that's all from my side today. Thank you so much. Keep on practicing. Stay healthy. Take care. Bye-bye.